First question. Mention any 5 basic features of India's foreign policy. आज नए नए बच्चे आगे आइए और नए बच्चे आगे आइए। अच्छा ठीक है, जितने हैं उन्हीं लोगों को पूछ लेती हूँ पहले। बोलो शुभ, बोलो। Yes, ma'am. The 5 points of the Indian Independence Act in 1947 are as follows. No, The British rule no, Shubh. I asked that mention any 5 basic features of India's foreign policy. Yes, ma'am. Sorry. The 5 basic features of Indian foreign policy are as follows. India does not get involved in any aligned movement. India supports international peace and security. India has complete belief on the United Nations organizations. India has adopted policy of mutual respect. India also cooperates with its neighbors. ठीक है, विपाशा। Basic features of Indian foreign policies are promotion of world peace. India will promote peace and harmony all over the world. Second, non-alignment. India will do not join any group. Third, religion cooperation. Fourth, friendly relation with neighbors. And fifth, Panchsheel. Okay. Aditya Raj. Yes, ma'am. 5 basic features of Indian foreign policy are: India has complete faith in United Nations. India doesn't get involved in non-aligned movement. India cooperate all the religion. India promote peace, world peace. India has friendly relation with his neighbors. India is against any type of discrimination on the basis of caste, gender, etc. Okay. Our democratic government has also protected the interest of the backward section of the society. Justify the statement by giving 3 arguments. Bolo, Prince. Yes, ma'am. Our government has protected the backward section of society. First, they banned the untouchability. The reservations seats are reserved in legislative assembly. Some acts are passed to protect the interest of backward section of societies. अनन्या सिंह, आपके आंसर सही हैं। आपने जो लिखे चैट में सही है। ठीक है, सारिका बोलो यही आंसर जो अभी मैंने पूछा। All citizens are included in the decision-making process. Emphasis on equality and provision of equal opportunities for all. Provision of an electoral system which helps to secure and safeguard the interest of the backward section of the society. ठीक है। Describe India's economic progress by highlighting the major achievement in this field. कोई और बच्चे? बोलो प्रिंस, बोलो। यस मैम। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए थोड़ा। Describe India's economic progress by highlighting the major achievement in this field.
our economic progress can be witnessed an expansion in diversification of production in both in industries and agricultural sectors. The government has built infrastructure like technology, information technology, powered communications, transport, etc., which are the basic requirement for the industries. The government has also followed a policy of encouraging the small industries. They give him a lot of assistance in the agricultural sectors. He developed he developed a fertilizer in agricultural sector, mechanization, irrigation, fertilizer, research. यहाँ पे ही का यूज नहीं करना तो अच्छा है ना? ठीक है, ही का यूज मत करना, ठीक है। अच्छा, हम फिर बता देते हैं, ये D2, D5, D4 और एक ही जैसा आंसर है यहाँ E2। ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हर जगह ही देखो इकोनॉमिक थिंग है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एग्रीकल्चर भी आएंगे और इंडस्ट्री भी आएंगे। अब देखिए D2 में था कि हाईलाइट इंडियाज मेजर अचीवमेंट इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, ओके। अच्छा, फिर देखिए कि नंबर 5 में नहीं, नंबर 5 नहीं, E2 में भी वही है, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो ये सब एक ही जैसा है, ये दोनों आंसर, इसके आंसर भी सेम है, बट बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है, 3 challenges faced by Indian society even now. May I say? बोलो। Yes, ma'am. 3 challenges faced by the Indian democracy are as follows. First, a vast majority of Indian population is illiterate. Second, many of the people living in the urban and rural areas are suffering from poverty. And third, India has a very high density of population, which is resulting in the quick depletion of resources. वेरी गुड। अनन्या सिंह बोलना चाह रही थी, बोलो अनन्या। अच्छा, लिख दी हो, बट अनन्या एक्सप्लेन भी करो। हाँ बोलो। The challenges being faced by the Indian society even now are illiteracy, poor health, and poverty. एक्सप्लेन नहीं करोगी, सिर्फ पॉइंट लेके छोड़ दोगी? तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है एक्सप्लेन करना। बोलिए, सेंटेंस को बढ़ाइए, कुछ जो दिमाग में आए। 3 पॉइंट के लिए तो वर्ड्स भी चाहिए ना। हाँ हाँ, छोड़िएगा नहीं, आप लोग जैसे अच्छे बच्चे इसे पॉइंट लिख कर नहीं छोड़ कर आएंगे, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन। कॉपी अपने स्कूल में नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा तो ये दूसरे स्कूल जाती है, आपका 8 बोर्ड है, तो ऐसे छोड़कर मत आइएगा। बोलिए अनन्या, देखती हूँ, मुझे पता है प्रिपेयर नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। जो आता है इस तीनों पॉइंट को बस एक एक लाइन भी बोल दीजिए, तीनों के लिए बना के बोलिए, दिमाग से सोचिए। Yes, ma'am. हाँ बोलो। Many people of India are still illiterate, हाँ, and due to this, that's why they cannot contribute the development of our country. बढ़ाइए, इसी तरह से आगे बढ़ा दीजिए। our country is not yet developed, and they are not contributing their best. Issue. Yes, they are not contributing in the progress of the country. इसी तरह से ठीक है, चलो इसे और कोई बोलेगा? हाँ बोलो बोलो अनन्या। Poor health is the major issue of our country. Government is doing a lot in this field, in this pandemic.
our government has controlled the situation in a very nice way. इसमें तो हम लोग ना नहीं कर सकते हैं ना. Our government provided vaccine so that थोड़ा सा डेटा देख लीजिएगा. एक तो बात का बात कह रहे हैं कि कितने परसेंट पीपल आर वैक्सीनेटेड एंड 150 crore. ओके, वेरी गुड शुभ, वेरी गुड. और 15 to 18 years में भी स्टार्ट हो गए हैं एंड प्लानिंग चल रही है कम एज के लिए. एक हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं. मैं नहीं कह रही हूँ कि ये चीज आपको लिखना है या कुछ, बट हम लोगों को नॉलेज हमेशा अपडेट हमेशा हम लोगों को अपने आप को रखना है ताकि ऐसे सिचुएशन पे हम लोग कुछ भी अपना लिख सके. और अब तो दरवाजा खुल जा रहा है आप लोगों को आगे बढ़ने के, और तरह तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे, फेस करने होंगे, कंपटीशन फेस करने होंगे. जो बच्चा जितना इधर उधर दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएगा, अपने आप को अपडेट रखेगा, वो सक्सेसफुल रहेगा लाइफ में, है ना. तो हम लोगों को कुएं का मेढक नहीं बन के रहना है कि बस इस बुक में जो लिखी हुई है उसी में. 9th 10th में तो आपको और बाकी बुक से भी हेल्पिंग बुक्स भी आपको लेनी ही होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ये इस क्वेश्चन को लेते हैं बैकवर्ड वाला. आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 3 आर्गुमेंट्स. कुछ और बच्चे बोलिए. आज अनामिका विवाकर को देखे एडमिट हुए हैं. क्या आप लोगों का इस बार कहाँ थे आप लोग? पिछली बार बोले क्या तो बोले थे कुछ हो गया है. इस बार अनामिका और विवाकर कहाँ थे इतने जमाने? और आज नित्यम एडमिट हुआ है इतने दिनों बाद. नित्यम पढ़ाई हो रही है? नित्यम पढ़ाई हो रही है? यस मैम. यस मैम, ठीक है. और कौन बच्चे हैं जरा सा देख लूं. Ma'am, please repeat the question. प्लीज रिपीट. ओके ओके ओके, कर रिपीट कर रहे हैं. क्वेश्चन था आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट has also protected the interest of the backward section of the society. Justify the statement by giving 3 arguments. भूल गए क्या शुभ? No, ma'am. बोलो फिर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Our government has made various provisions for the protection of backward castes. Some of them are as follows: the universal adult franchise grants the right to vote to every citizen, irrespective of their castes. Yes, ma'am. And our government has provided reservations for them in various places. Untouchability has been abolished. वो वाला पॉइंट बोलो जो स्पेशल, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो वाले पॉइंट को इंक्लूड कीजिए. Yes, ma'am. Reserved constituencies have been provided for SC/STs. यस. और फिर जो आपने वहां पढ़ा था, जिस चैप्टर को पढ़ना नहीं था, मतलब कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आने हैं, कौन सा एक्ट था? वो एक्ट को भी यहाँ लिख सकते हैं. क्या था बताइए तो. Manual Scavengers Act. वो नहीं एट्रोसाइट्स प्रिवेंशन एट्रोसाइट एक्ट. क्या था? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स. रुक जाओ देखते हैं, याद नहीं आ रहा है. जिसमें बैकवर्ड के साथ आप कोई मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं. Yes, ma'am. वो वाले पर वो क्वेश्चन एक्ट का नाम हम देख के बता देते. एक सेकंड. ये रहा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स एक्ट 1989. बाय द हेल्प ऑफ Yes, दिस ma'am.
बोलो ना बोलो फिर बताती हूँ, फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ। ये जानकारी रहा तो आप इसको भी कोरिलेट इस आंसर में कर सकते, क्योंकि ये बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की भलाई के लिए, की इम्प्रूवमेंट की। अच्छा, और इस चैप्टर में तो आपको Many बहुत scheme सारे, launched by हाँ government. हाँ 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 हाँ, आदित्य बोलो बोलो और सारे वो बताइए, जिसमें कि उन बताइए, पहले आदित्य का सुन लेते हैं फिर हम अपना थोड़ा सा बोल देंगे। बोलो आदित्य। नो मैम, बस यही पॉइंट बोलना था कि मैनी ओ, सिर्फ यही schemes are बोलना था। launched by the government. अच्छा, तो 3 पॉइंट आपके हुए, 3 हुए। मैम Yes, ma'am. नो, देखो, इसमें तुम फंडामेंटल राइट को भी इंक्लूड कर सकते हो। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी के तहत ऑल आर इक्वल, दे आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी हैज बीन बैंड, जो कि शुभ शुभ ने बता दिया। और क्या, और क्या? Ma'am, universal adult franchise grants every citizen हाँ, right to vote. यस यस। तीसरा क्या हुआ? तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड, हाँ हो भी सकता है। कुछ और देख लीजिए, हमने क्या लिखवाया है, याद तो नहीं Ma'am, आ the रहा है। government has provided reservation for them in various हाँ हाँ places. हाँ 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 हाँ, रिजर्वेशन 3 हो गए। बाकी लोगों को याद रहा ये आंसर? थोड़ा सा ये कुशाग्र हो, कुशाग्र बोलो, कुशाग्र। नहीं, विपाशा बोलेगी, बोलो। By providing reservation for them. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Our democratic government has also protected the interest of the backward sections of the society. Justify the statement by giving 3 arguments. Our government has also protected the interest of the backward classes as by providing reservation for them, by giving them medical facilities and educational facilities, by launching many of the programs for them. ठीक है, next question. Next है, what is meant by independence of judiciary? Give any 2 examples to prove that Indian judiciary is independent. कौन बोलेंगे? सारिका बोलो। Yes, ma'am. The justice is possible only if the our judiciary is independent, impartial, and unbiased. Our constitution has various provisions which make our judiciary independent and keep it away from the influence of the legislature and the executive. 2 examples to prove that Indian judiciary is independent are: the judges are appointed on the basis of their qualifications. They cannot be removed easily. This is special procedure to remove them called impeachment. There is special process to remove them called impeachment. Okay, मीनल, सेम क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ। What is meant by independence of judiciary? Give any 2 examples to prove that Indian judiciary is independent. Justice is possible only if the judiciary is independent, impartial, and unbiased. Our constitution has various provisions which make our judiciary independent, keep it free from the influence of the legislature and the executive. 2 examples are: the judges are appointed on the basis of their qualification. The judges cannot be removed easily. There is a special procedure to remove them called impeachment. Good. Aditya Raj? Yes, ma'am. And judiciary of India is quite independent because
Justice is possible only when the Indian judiciary is independent, unbiased, and impartial. In the Constitution, various provisions are given to make our judiciary independent and keep it away from executive and legislature, so that the judiciary can make their own decision without any effect of legislature and executive. Good. Describe the composition of criminal court and revenue court. Supriya. Yes, ma'am. Criminal courts. The highest criminal court in a district is the Court of Session Judge. Below this, there are courts of magistrate of first, second, and third class. Revenue courts. The highest revenue court in a district is the Board of Revenue. Below this, there are Court of Commissioner, Collector, Tehsildar, and Assistant Tehsildar. Okay. और यही क्वेश्चन कोई और बोलिए. Describe the composition of criminal court and revenue court. बोलो प्रिंस. The highest, yes ma'am, the highest criminal courts, the highest criminal court, the highest court for a criminal cases is a session judge. Below this, the courts of the court of magistrate of first class, second class, and third class in the in the big cities like Mumbai, Chennai, a metropolitan. The first class magistrate is also known as a metropolitan magistrate, and board of revenue courts. The highest revenue court in a district is called board of revenue. Under this, which this deals the cases related to lands. The courts of commissioners, collectors, assistant tehsildar, and tehsildars works under these courts. अच्छा, आस्था, प्राची, हर्षराज, तुम लोगों को ये क्वेश्चन याद है किसी को? आस्था, प्राची बोलो. Yes, ma'am. Criminal courts. For criminal cases in a district, the highest court is the court of the session judge. Below this court, there are courts of magistrate of first, second, and third class. Revenue courts. The highest revenue court in a district is the Board of Revenue. Below the courts of commissioner, collector, tehsildar, and assistant tehsildar work under the Board of Revenue. गुड. ये चैप्टर में आपको याद करने में दिक्कत होती है क्या तुम बच्चों को? किसी क्वेश्चन में यदि दिक्कत है तो आप लोग जब तक बताओगे नहीं, हम उसको इजी कैसे बनाएंगे? अब तो पढ़ाने का वक्त चला गया है. अब हम लोग बस यही तो कर सकते हैं कि जिससे जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो कुछ बच्चों के आज चुप रहने से मुझे लग रहा है कि जैसे और दिन आप लोग बाकी सारे आगे आते थे. कुछ बच्चे तो हमेशा ही आ रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं. तो उन लोगों के लिए लगता है आज ये कुछ हार्ड हो गया था. ये चैप्टर हार्ड लगता है क्या? स्पेशली क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ये सब में सिर्फ आपको सीक्वेंस याद रखनी कि इसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है. सिटी में ये हाईएस्ट है, वहां पर ये हाईएस्ट है. क्रिमिनल कोर्ट का ये इसे हाईएस्ट कहते हैं. ये सब नाम याद रखने हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हो मेरे साथ, बोलो. नहीं. अच्छा,
और एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर लीव होंगे। और नेक्स्ट डे क्या रहेगा? मैम 9। 9 और और मैम 10। 2। 2 ठीक है। यस 2 और 9 रखेंगे नेक्स्ट डे फिर। और ये सब में से भी कुछ बचा रहेगा, फिर बीच में एक बार ऐसे कर देंगे कि हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मिला जुला कर क्वेश्चन सेट किया जाएगा, ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाएगा। तो ठीक है, कल का रहेगा 2 और 9। आपने कहा 9 पढ़ना है ना? हम लोग को शायद 12 13 नहीं पढ़ने हैं, है ना? 12, हाँ 12 और 13 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, 9 पढ़ने हैं, ठीक है, वेरी गुड। 2 एंड 9 आप कह रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर एग्री स्टूडेंट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. 2 एंड 9, Yes, ma'am. ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। State the significance of public interest litigation in the Indian judicial system. बोलो प्रिंस, बोलो। Yes, ma'am. अच्छा एक मिनट और बच्चे, एक मिनट। सुप्रिया बोलो, तो प्रिंस तो बहुत जवाब दे रहा है। सुप्रिया बोलो, उसके बाद आदित्य राज। Yes, ma'am. हाँ, आदित्य राज में क्या कहते हैं? हाँ, देखते हैं और कौन। हाँ बोलो सुप्रिया, बोलो। Yes, ma'am. Vast majority of people living in India are poor and illiterate. They can't even imagine of going to the court to seek justice. Justice is a remote dream for them. So the concept of public interest litigation was devised by the Supreme Court of India. The public interest litigation is a novel idea. It helps the poor, the illiterate, and the ignorant. The success story of various bills has encouraged the people to initiate more and more bills on the matter of urgent public importance. ओके, ये भावना ठाकुर किस सेक्शन की हो? भावना, इस नाम से भावना किस सेक्शन की हो? मैम 8 है। मैम एफ, 8 है। अच्छा 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 अच्छा। क्या कहते हैं, और किसे पूछूं? प्राची बोलो, प्राची। Yes, ma'am. Vast majority of the people living in India are poor and illiterate. They cannot even think of going to the courts to seek justice. Um, it is a novel idea. Justice is a remote dream for them. The concept of public interest litigation was devised by the Supreme Court of India. Um, it helps the poor, the illiterate, and the ignorant. The success story of various PIL has encouraged people to initiate more and more um, appeals on matters of urgent public importance. ओके, तो ठीक है, इतना रखते हैं आज। चैप्टर 2 एंड 9 होमवर्क रहा। Okay, ma'am. लीव हो कि और पढ़ोगे? यस मैम ओके। चलो ठीक है फिर, ओके। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.